Okay, see, So when one more thing, when you are applying the d count function or d sum function, first you have to create the criteria table. तो अगर वो yeah, I created the criteria table here. ठीक है हाँ. Now what is your issue? What is the error that you are Sir, getting? like here, Just reduce the size of this. इसको है ना थोड़ा सा स्क्वीज कर दो so that we can see. अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है. और आपके यहाँ पे जो ये जूम का वो आ रहा है ना पार्टिसिपेंट्स का विंडो उसको भी क्लोज कर दो. पैनल एक आ रहा है उसको साइड में कर दो. is it visible, sir? हाँ, now it is visible. Correct. Yes, now I So can see. here I Just reduce applied. the width of this salesman column also. Just a minute, sir. Today we are going to learn about if functions which are very important. जो कल मैंने फाइल दी थी उसमें कुछ problems थे. There are some things which I will take tomorrow, not today. ठीक है, but let others also try it. Then we'll take tomorrow. Yes, the count you are applying. Now, what do you want to calculate? So yeah, so first is sales in this criteria sales. No, no, Sorry, no. Data the name, table name. Sorry, the table name. table name, data Yeah. tab, whatever Okay. name you have given So to the table. I have given the sheet name to the table. But Uh, it is not. is It is not showing that you have given the name. आप चेक कर लो एक बार क्या नेम दिया फॉर्मूला टैब में जाके. जस्ट चेक व्हाट नेम यू हैव गिवन टू द टेबल. या जस्ट सेलेक्ट द एंटायर टेबल वो भी उससे भी दिख जाएगा. जस्ट सेलेक्ट कंट्रोल ये दबा दो यहाँ पर. नो नॉट दिस वन. सेलेक्ट फ्रॉम हियर एंड देन प्रेस कंट्रोल ए. या मैनुअली सेलेक्ट करके देख लो कि व्हाट नेम यू हैव गिवन टू द टेबल. हैव यू नॉट इंक्लूडेड द सेल्समैन कॉलम और सेल्समैन को भी इंक्लूड किया है. I have included all the things and I've ओके. named it sheet, but somehow it is showing value. So That is the reason why you are getting an error. Maybe something is missing. Yeah, now see. Go to see it is not showing any name. Go to name manager. Now where is sheet? Where is sheet appearing? इसका नाम लिख दो. अब लिख दो इसको sheet. But don't give sheet name because sheet से confuse जाओगे. Data sheet you can call. D sheet लिख दो या तो. राहुल अपना नाम ही डाल देता हूँ अपना इसमें। नाम डाल दो. हाँ ठीक है ठीक है. ओके कर दो. Now write the formula. Sorry, sir, it is taking time. Sorry, sir. Not a problem. Not a problem. We can spend 2 minutes for it. Not a problem. जब तक किसी की एरर्स रिजॉल्व नहीं होंगे देयर इज नो पॉइंट ना. तो फिर हमारा पुराना वाला भी होना चाहिए. समवन इफ समवन हैज एनी डाउट्स यू कैन आस्क. यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू देम. बट डोंट कैरी योर डाउट. कैरी फॉरवर्ड मत करो अपने डाउट्स को. यस यू कैन सबमिट योर assignment by tomorrow 5 p.m. Not a problem. Today what we are doing, tomorrow you can submit. Yeah, so after this, I have taken Yes, six, correct, correct, correct. and after this, I have created criteria. हाँ, so I've what criteria? selected the this table, Okay, correct. but it is showing like this, like you have seen that J13 to N14. हाँ तो it is why because you are not given any name to this range. Okay, so it will show J13 to N14. There's nothing wrong. You can close the bracket and press enter. So you are getting 281. Now what you do, you write July in the month column. Month में जुलाई टाइप करिए. एंटर करिए. 23 आ गया तो it is working. Now So why it's I actually, was getting. हाँ yeah, because maybe with now the what you do is you remove this July, remove the July. okay. Now you select all the columns from year to salesman and the column beneath and then give it a name. ठीक है वापस नेम मैनेजर में जाओ and write CRI criteria. CRI, give it a name CRI. you already given CRI तो CRI T करना पड़ेगा. The name which I have given is Mehrotra. ठीक है. Okay. Now you can type you will get Rahul and Malhotra.
K5 solved. I have solved all from my asset. Okay, Harshil, you can send your file to me. Do not send into the group, or you can send personally to me. I will check because Yeah, it's fine, yeah. many people have submitted. Oh, no. Now it is working, Rahul. Your problem is resolved. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, fine, great. Anyone else who has any doubt, or shall we start with the? I hope you have all downloaded the file which I have shared in the group for a function, and now I'm going to share my screen. Just a minute. Oh, no. Now it is working, Rahul. Your problem is resolved. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, fine, great. Anyone else who has any doubt, or shall we start with the? I hope you have. Okay, so this was not a problem, not a problem. Chali, let me share my screen and let us see. So today I had not put the formulas for all the functions. You can type it so that you can remember the names also. Purposefully, I've not put the formulas, syntax, so that you can learn it. These are very important functions. Today, whatever we are going to cover is going to be very, very important. So pay attention. And if you don't understand anything, you can put in the chat box or you can ask me. I will guide you again on this. Chaliye, now let us start with this. So I hope, acha, before I start, how many of you have used if function before? If you have used, you can say yes. और जिसका पहला बार है, you can write down first time. Those who will be learning if functions, the entire family, मतलब इनमें से अगर कोई भी एक आपने पहली बार सीख रहे हैं तो write down first in the chat box. Soumya says yes. Yes, मतलब used, not used. Kashish says first time. So those who are learning it for first time, you just type first time because I will come to know what is the audience containing. Okay. First time. If, with, or use. Okay, fine. Chali, let us start with it. And what is the use of if function? When do you use if? And there is one interesting thing about if, a condition, correct? So whenever there is a condition and whenever there is a The condition, condition. and there can be two possible outcomes of the condition. There is a condition and there can be two possible outcome. Either this we can do or that we can do. Then we have to use if condition. If we have multiple conditions, if this happens, then then we have to test this, and then we have to test this. Then we can use nested if or ifs. If there are two conditions or three conditions and all of them should be true, okay, then we will use and. If either or, okay, any one condition is true, then we can use or. And if none of the conditions should be true, then we will select not. So these are different types of logical functions in Excel. There are some more, but these are the most commonly used functions in Excel. Okay. So abhi start karte hain. Let us start with this. And let us start with if. So what is the syntax of if function? So is equals to, when you write if, first it will ask you logical test. Okay. So logical test, what is the meaning of logical test? The condition that you want to test. Okay. So whatever you want to test is called as a logical test. For example, you want to check whether the student has passed in the exam or not. So there is a condition to be applied. What is the condition? If the student has secured 40 marks, I'm talking about CA students or any other student, we can take an example of. If the student has secured 40 marks in each paper, more than 40 marks, he is passed. And then this is the condition. If you have secured 40 plus marks in one paper, you are passed. So that is the logical test, that the marks should be greater than what? 40. If the marks are greater than 40, then value if true,
what should be the value? So what should be the value? Value of true. क्या होना चाहिए इसमें? What result do you want? So we want Pass. pass. Correct. We want pass. If the condition is not met, मतलब अगर स्टूडेंट के 40 नंबर नहीं आए तो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा. तो वैल्यू if fail. Okay. Now I have a basic question to for everyone who have used this if function. Okay. And before I press enter. Now if I put enter, will it give me an error? Can you just tell me yes or no? मैंने इज इक्वल टू लगाया इफ के अंदर, कुछ वैल्यूज देने की जगह उसका सिंटेक्स ही लिख दिया है. क्या ये एरर देगा मुझे? Will it give me an error or will not give me an error? Yes, people are saying yes. Okay, so let us put enter and see it is giving me name error. That means it has not understood what you have written inside the if function. So how do I write a formula where I can put a is equal to sign and it will remain the same? What do I add in the beginning so that correct text should be in inverted comma? Okay, fine. So if I put this into inverted comma, will it not give me the error? So if I put, so this is a text, I put this in inverted comma. But what about logical test? What about logical test? So if I put logical test also into inverted comma, will it apply? So Mr. Francis has given us the right answer. Okay, he has given us the right answer that we need to put a apostrophe before the formula. So it is now giving me a value error. So you understand that we are seeing two errors. Pehle name error aa raha tha, earlier name error was coming, now it is giving value error. Why it is giving me value error? Tell me. Why it is giving me value error? Can anyone unmute and answer? Why we are getting a value error here? यहाँ value error क्यों आया? Because there is no logical test. हमने लॉजिकल टेस्ट में कोई टेस्ट बताया नहीं उसको चेक करने के लिए, इसलिए वैल्यू एरर आ रहा है. नाउ सपोज इफ आई पुट अपॉस्ट्रोफी बिफोर द फॉर्मूला, ये देखिए आई एम पुटिंग अपॉस्ट्रोफी हियर, दिस इज अपॉस्ट्रोफी और अ सिंगल कोट, यू कैन से it will not give me an error. It will type the formula as it is with a equals to sign. So that can be a learning for the day, that whenever you want to write the formula with is equal to for your reference, you can put a apostrophe. Okay, now suppose I write 2 plus 2, 2 plus 2. What answer will I get, everyone in the chat box? 4. 4. Correct. We will get 4. Okay. But I want to type is equal to 2 plus 2. Then what should I do? I will just put an apostrophe and it will type is equal to 2 plus 2. Correct? So this is the if function. Now nested if is when you use if inside if. There is no formula called as nested if. There is no formula called as nested if. But when you use if inside an if, it become nest. तो जब मैं इसको स्टूडेंट्स को समझाता हूं तो मैं बोलता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेस्ट? Multiple conditions. अरे नेस्ट का हिंदी में मतलब बताओ, एक्सेल को भूल जाओ थोड़ी सी. नेस्ट का मतलब क्या होता है? So, NEST. what's next? जाल जाल जाल, चिड़िया का जाल, घोंसला. ठीक है, तो जब चिड़िया जाल बनाती है या घोंसला बनाती है तो तिनका जोड़ के एक के अंदर एक फंसाती जाती है और उससे उसका पूरा नेस्ट बन जाता है. ठीक है, सिमिलरली नेस्टेड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर मेड ऑफ मल्टीपल फंक्शंस. एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा. So whenever you put multiple functions together, no, it is not loop. Loop is something different. But if you put one function inside a function and then inside a function, this is called as nested function. Mixture, yes. ठीक है, तो जैसे रतलामी या भुजिया बीकानेरी वाले का मिक्सचर आता है, उसमें थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा नमकीन भी होता है. तो ऐसे एक्सेल में भी यू कैन प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मुलाज बाय यूजिंग नेस्टेड फंक्शंस. सो नाउ क्वेश्चन इज, when do we use nested functions? Whenever there are multiple conditions. Now you will ask me, sir, why we can use ifs? So why to use nested if is available only in the latest versions of Excel. अभी जितने भी लोग इसमें है मीटिंग में, those who are watching me live, which those who are there in the Zoom meeting,
Can you type ifs and see if it is there in your Excel? सब लोग just type is equal to ifs and see if you are getting the function. And if someone is not getting, you can type not getting is equal to ifs type करना है आपको. So Hiren says yes. What about others? Are you also getting ifs? I got ifs. Those who are not getting, then they can write not getting. इसका मतलब everyone is using a latest version of Excel. Still, I will teach you nested if also. ठीक है, but because sometimes it is easier to use nested if. Everyone is saying I got. Okay, not a problem. So whenever there is multiple conditions, so we can say if, we'll put if logical test, comma. Now instead of value of true, we can say again another if, and then logical test. So when you want to do a test inside a test, so Shefali says no sir. तो एक तो मिल ही गया मुझे ऐसा जिसके पास ifs नहीं है. Shefali, which Excel are you using? Which version of Excel are you using? And how do we check which version of Excel are you using? Are we using? कैसे चेक करते हैं ये कि Excel का कौन सा वाला हम यूज कर रहे हैं? Anyone who knows this? How to test which Excel version are you using? Go to तो file. फाइल पे जाके अकाउंट पे. Correct. So you go to file, and you go to account, and in the account it will show you. So I am using Excel 365 subscription, so it is showing me. So you can check which Excel are you using. And Shefali 2007. Oh my God, we are in 2023, which is going to end, and we are going to enter 2024, and still people are using 2007 वाला Excel. बहुत नाइंसाफी है ये तो. ठीक है. अपडेट योरसेल्फ. ठीक है, अपडेट. न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि मैं दिवाली पे एक्सेल की शॉपिंग करूंगी. अपग्रेड योरसेल्फ गाइस. क्या कर रहे हो आप? 2007 में कौन यूज करता है? मतलब ओ माय गॉड. अभी भी बेल बॉटम की पैंट्स पहन रहे हैं क्या आप लोग? शेफाली, डू यू वेयर बेल बॉटम्स? तो व्हाई आर यू यूजिंग 2007? अपडेट. थोड़ा पैसा खर्च करो, एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू मोर मनी. ठीक है. नेस्टेड इफ के अंदर इफ के अंदर इफ. ठीक है. इफ्स क्या होता है? इफ्स. यस. एनीवन सेइंग एनीथिंग? ओके. So ifs means logical test 1, value of true. So first you will write the first logical test. I'm explaining the basics, then we'll come to the solutions. Test 1, value of true. So value of true, so we will say true. Bell bottom are trending now, sir. Okay. Bell bottoms are always trending. Retro to metro. Okay. So false, value of false. And then you can say logical test 2. So that is not an excuse to not update Excel. Okay. कि बेल बॉटम चल रहा है, हम एक्सेल से भी काम चला लेंगे, ऐसा नहीं करना है. ठीक है. So if logical test true, false, logical test true, false. So that is ifs. And when to use and function? And is used when you want to check whether all the arguments are true and returns true if all the arguments are true. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि suppose you want to check whether the student has passed in the CA exams or not. So for to pass a CA exams, there are two conditions. One, in all the papers you should get 40 marks, and in aggregate you should get 50%. So now I want to test both the Sorry conditions. for the interruption. In ifs, you wrote logical test 1, true and false. Instead of false, there would be logical test 2, and at last there will be value Okay, if false. sorry. Yes. My mistake. Okay. So there will be no false, logical test 1 and true. Then logical test true and true. That is what you're saying, right? Yes, sir. Yes. And in the end, it will be false if all the conditions are not met. That is
No false will be there. No false will be there. Only true. Okay, let us see the formula again. If logical test 1, so let me type something, comma, value of true, then logical test 2, value of true, then logical test 3, value of true. So that means it will check for all the values and value of true will come. So what about false in that case? Yes, for the false, you have to create the condition again. Huh? Remaining condition. What about if the condition is not met? What if the value is false? Then what should happen in that case? Chalo, we will explore this when we are doing it. If condition is not met, it will false. Yes, but what result will it give when it is false? Because we are not mentioning any result in the false. Are you getting it? What I'm asking. So AND function, you have to give logical 1. What is the first logic? Then second logic. Then third logic. And so on. There is no true and false. There is no value of true and value of false in AND. So what will it return when all the conditions are met? By default, it will return true, and if not all the condition are met, then it will return false. ठीक है? तो सारी condition अगर match होगी तो true आएगा, otherwise false आएगा. और में क्या होगा? Same syntax is there for or also. You have to just keep on giving the conditions. If any of the condition is true, it will return true, else it will return false. And in not, changes false to true or true to false. So not will do the reverse work. Okay. So if the answer is true, it will return it as false. And if the answer is false, it will return true. Okay. It's just like that game which you play के उल्टा पुल्टा. So it is just like that कि अगर आपने not लगा दिया तो जो true वाली है उसको false बोलेगा, false वाली को true बोलेगा. Now let us come to the illustration that will help you in understanding this better. Okay. So exactly 10 o'clock we are starting. I think in next 30 minutes we'll be able to solve all the 4 exercises. And by the end of these 30 minutes, you will be a master in applying if function. That is what I am assuming. That is what my motive is. कि आप लोग इस सेशन से आज जब बाहर निकलेंगे तो आप if के बादशाह होंगे, if फंक्शन के. ठीक है? एंड सी द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच. तो आप लोग को एक काम करना है, कल जो भी आपसे मिले और आप अगर वो एक्सेल में काम कर रहा हो उसको if फंक्शन समझा देना, जबरदस्ती पकड़ के कि सीख ले में से. ठीक है? चलिए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, let us read the question. If revenue is above or equal to 20,000, then bonus will be 10% of salary. Otherwise, bonus will be no bonus. If revenue is below 15,000, then performance will be a sad face, otherwise a smiley face. So there are 2 conditions basically. We will do one by one. So this is number 1, this is number 2. ठीक है? पहला कंडीशन ये है. पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि if revenue, ये वाला जो कॉलम है revenue वाला. So Adisha is saying, tomorrow in TTMS, I will teach someone. Yes, I will call you Adisha in the class. You will teach the entire class tomorrow. Okay, so be prepared. अभी ध्यान से पढ़ लेना, कल मैं तुम्हारे को क्लास में खड़ा कर दूंगा, सबको तुम ही पढ़ाओगे ये फंक्शन. ठीक है? Not a problem, Sanjay. You can watch the recording also and submit. Adisha बोली मैंने क्यों बोला. Sometimes you get an opportunity to do something bigger. Always take that opportunity. ठीक है? बार बार नहीं मिलती ऐसी opportunity. So we have to test the revenue, and if the revenue is more than or equal to 20,000, then you have to give bonus which is equal to 10% of salary. Otherwise, no bonus. Now, who will help me with this? Rahul, will you help me with this? How to start? If अभी क्या करें? What should I write in the logical test? Anyone who is volunteer? Sir, salary. Sorry, the revenue side, yeah. Revenue. Revenue, and then We Greater want than. to test whether it is greater than is equal to. So Yeah, how do I write greater than is equal to Yes. in Excel?
greater than or equal to 20,000, Then, comma, comma, value if true, we will write this 10% salary hike in single inverted Inverted quote. comma. okay, so we'll write down 10% 10%. salary hike. Okay, else what should we write? No bonus, No bonus. no bonus. Okay, so the first answer we are getting is 10% salary hike, and we will repeat it for the others also. So here, this person Ajay is getting a 10% hike. This is the formula, everyone. Those Yeah. who have not got it, you can see this is the formula. Gurjot has put in the chat box also. Even I have put. So now see, there are two ways to approaches to it. First is that you want to get the message written like 10% salary hike and no bonus. Second could be to write the bonus, because you can give the bonus in amount also. Okay, what bonus he is getting. Okay, so I'm doing the other way also. I will add, so this is bonus status. I'm just making this column as bonus status. We will add one more column. We will copy this column. Everyone do it in the Excel also, and write down bonus in rupees. Bonus in rupees. Now see, this was not a part of this thing, but I'm adding it now. What you have to do is, if someone is getting a salary hike, then calculate the bonus. So 10% of revenue. If it is not getting any salary hike, then write 0. So how we will write this formula? Repeat. Aryan says repeat. Okay. So see, what we did is, let me repeat everything. So we wanted to check whether the revenue is more than 20,000 or not. So मैंने start किया, if this is the revenue, I want to check whether it is more than 20,000 or not. So I will write down greater than is equals to 20,000, comma. Okay, this is a logical test. Now what I want, if the value is true, I want this statement that salary hike at the rate of 10%, or you can say bonus at the rate of 10%. Okay, so bonus at the rate of 10% of salary. Okay, if the condition is not met, then we want to write no bonus. So this is the result which I wanted. Now I can copy this formula and it will give me the same result for everyone. Now it is fine to everyone. Have you understood the if function? I hope everyone has understood the if function. Be Yes. active in the chat box So also. one thing I want to ask that Yes. here and the question is asking about 10% of the bonus. Ah. But if we want simply bonus, no bonus. So apart from writing 10% of salary, in place of that we can write bonus and Yes, comma. yes. So We can write down. We can write down bonus and not a bonus. It is purely up to you what message you want to give. So we can just write bonus and no bonus, not a problem. and Okay. so the after selecting the revenue, Hmm. is it like we have done is equals to and greater than? Uh-huh. So this thing I'm not getting it. Yes. So That we are saying ki if the revenue is above or equal to. So if it is above, then we should use greater than. Suppose I remove the equals to sign. I remove the equals to sign. Okay. And someone is earning 20,000. Then will the bonus be given or not given? no bonus will be given. Why? Read the question number 1 again. If revenue is above or equal to. So Two here to the 20,000. Suresh has earned 20,000. He should get the bonus or not get the bonus? He should get the bonus because it is equal to But he is 20,000. not getting as per the formula, na? Why he is Yes. not getting the bonus here? Because we have not put equals to. तो आपने अगर एक गलती कर दी ना, आपकी गलती की सजा बेचारे एम्प्लॉय को मिल जाएगी, उसको बोनस नहीं मिलेगा और उसकी हाई लगेगी तुम्हारे को. अरे सर ऐसा नहीं करते सर, ऐसे ही कर लेते. समझ में आया? तो किसी की हाई नहीं लेनी है तो एक्सेल सीख लो बेटा, नहीं तो अगर बाद में पता पड़ा कि बोनस मिलना चाहिए था और मिला नहीं तुम्हारी कैलकुलेशन से,
तो एचआर Yes. तो जूते खाएगा ही, गालियां खाएगा, धक्के तुम मार भी के खाओगे, निकालेगा सर। तुम भी खाओगे, Yes. जो ये शीट बना रहा है, ठीक है, इसलिए सो दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट दैट इज इक्वल टू साइन आल्सो, अदरवाइज यू विल रूइन समवन्स लाइफ। जिसको बोनस मिलना था उसको नहीं मिलेगा। पाप चढ़ेगा सर। हाँ, पाप, ऐसा पाप नहीं करना है, ठीक है, किसी के हक का नहीं खाना चाहिए कभी भी। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द बोनस। अब देखिए, नाउ हेल्प मी। सो व्हाट आई वांट टू चेक कि इफ द बोनस स्टेटस कॉलम हैज बोनस, then calculate 10% of revenue. If it is not having bonus, then write down 0. इसका फॉर्मूला लिख के बताइए। If bonus, yes, Gurjot has given the answer. I will just copy it and paste it over here. So what she's saying, if F7 is equal to bonus, Gurjot, there is some error in the formula which you have given. Can anyone tell me what is the error? Some नहीं, बहुत सारे error करे हैं इसने। पहला एरर बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट एरर यू कैन आइडेंटिफाई इन दिस? Single inverted comma for bonus. वेरी गुड, ये किसने बताया? Akshay. अक्षय, तो वेरी गुड सर अक्षय, नाइस ऑब्जर्वेशन। 10% के बाद इसने स्टार है बीच में। और ये यहाँ इन्वर्टेड, वहाँ inverted comma नहीं है ये। इंटू लिखा है, इंटू किया है इसने। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा? गुरजोत, क्या हो गया आज तुम्हारे को? मिस्टाइप हो या मिस टाइप या मिस्टेक, या मिस्टेक की वजह से मिस टाइप। और ब्लैंक नहीं, मुझे 0 चाहिए था, विल पुट 0। ओके, एंड 0 whenever you have to put any number, you can write it without putting inverted comma. अगर आपने inverted comma में लिखा ना, वो उसको टेक्स्ट मानेगा। I hope everyone has got the answer how we did this. If this is bonus, then calculate 10% of revenue, else put 0. So we have got the bonus in rupees also. I hope everyone has understood. E7 should be D7. Yeah, in her case, maybe she had put some other cell, but it should be E7 should be F7, right? So have you understood, everyone? Sir, it should be salary hike, not the revenue hike. Okay, sorry, my mistake. Yes. Okay, so it should be D7. Okay, I understood now. Sorry. Yes, correct. We have to give the hike on salary, not revenue. तो सैलरी वाले कॉलम से 10% मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट, करेक्ट। नाउ सी, लेट्स कम टू परफॉर्मेंस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ वी आर ऑन द सेकंड वन। इफ रेवेन्यू इज बिलो 15,000, then performance should be a sad face, otherwise a smiley face. Now how to insert faces in Excel? Now those who have been my student, उनको पता है शॉर्टकट की। लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। Give me a chat box. Give me a shortcut key to insert emojis in Excel. Come on, fast. No answer. अक्षय कुमार, तुम्हें तो पता है, बताओ। What is the emoji shortcut to put emoji in Excel? Come on. विंडोज डॉट Correct. Window plus the dot key. Yes, Shefali also is right. Correct. So when you press window dot, it might be new for everyone. If it is new, window plus semicolon से भी होता है क्या? Window semicolon. Okay, semicolon or dot. Yes, this is something new for many people. जिसके लिए new था वो new लिख दे, because मुझे भी पता पड़ेगा ना मैं नई चीजें बताता हूँ या नहीं बताता हूँ अपनी क्लास में। That is why I ask you to give feedback in the chat box, because I come to evaluate myself कि whether I'm teaching something new, और वही घिसा पिटा ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ मैं सब लोगों को, ठीक है? इसलिए मैं अपने लिए बोलता हूँ, आप लोग लिखा करें चैट पे। चलिए, बोनस इन आई विल रिपीट। ओके, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो नाउ आई वांट टू इंसर्ट अ इमोजी और स्माइलिंग फेस। यू कैन पुट अ स्माइल इन द दिस थिंग एंड वी कैन सेलेक्ट वन स्माइली। देखिए, दांत दिखाता हुआ स्माइली आ गया है। और इसी के आगे मैं ले लेता हूँ सैड फेस ऑल्सो। सैड, जिसको बोनस नहीं मिला वो बेचारा दुखी है, ठीक है? तो वी हैव इंसर्टेड 2 फेसेस ओवर हियर, ठीक है? नाउ लेट अस कॉपी पेस्ट इट इन सम अदर सेल।
ठीक है, Shefali, you had taught us. Okay. Shefali, I'm not able to recognize you. Can you introduce yourself? Where are you from? I'm not able to recognize you. चलिए, MBA. Okay, that is why I'm not able to recognize. Okay, great. So MBA people are also attending my classes. I'm glad to know that. Very good. तो बाकी बच्चे नहीं आ रहे तुम्हारे क्लास के, उनको भी बोलो थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो फायदा होगा उनका। चलिए, now see, now we have inserted two faces and I put a red color in this. Okay, red color के बना दिए and we can increase the font size also. Okay, now we want to find out whether the performance, if the revenue is below 15,000, then a sad smiley should come. If the revenue is more than 15,000, then a happy face should come. Now, how should I write the formula? Can anyone tell me? If Shefali, तुम ही बताओ, what should I write? You can unmute and answer. How to start this? So can you please repeat the question? Question is that if the revenue is less than 15,000, then there should be a sad smiley face. If the revenue is more than 50,000, then should be a happy smiley face. So what should I write in the logical test? If revenue is less than or equal to the price 15,000. 15,000, सर Yes. तो सेमी कॉलम में सैड Sad. इमोजी, Sad smiley. Okay. यस Just सर, a minute. एंड कॉमा, और एल्स फिर सेमी कॉलम में, Semicolon नहीं, inverted commas. यस सर, इन्वर्टेड कॉमा में. But see, when I'm selecting this cell, when I put the emojis into cell, I need not put what inverted commas. You can just give a reference to this cell. Okay. ओके सर. When you're typing it inside the formula, then you need to put the semicolon. I hope everyone has understood this. When we are putting the emoji inside the cell, then we need to put the emojis into inverted commas. Otherwise, we can just give the reference to the cell and we can get the answer. ये पहला वाला हमारा फेस स्माइली आ गया है. We have got the first smiley. Can you see that? यस सर. Now my question to everyone, to Shefali, you also. If I copy paste this formula, will I get, okay, Hirenji has given the answer, but still I will ask this question. See what happens is, here the bonus has been given, but we are getting a sad smiley. Here we are getting 0. Now what is the reason? Shefali, you tell me what is the mistake in this particular formula? What is the mistake in the formula, Shefali? Everyone, you can put in the chat Reference box. to J7 Sir, and we have not J8 freeze the is J7 and not J8. used. Exactly, we need to freeze J7 and J8 because when we copy paste the formula below, तो ये चेंज हो जाएगा, ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे Yes, ये लगा दिया. Now see, when I check this one, it is taking these two cells, but these two cells are empty. That is why we are getting a 0. So we need to freeze. That is why freezing is important. yes sir. And whenever I start Excel in my courses, the second day I teach cell freezing only. ठीक है, एक ही का चेहरा थोड़ा सा दुखी है, बाकी सब खुश हो रहे हैं. अगर suppose if I reduce this to 18,000, then there will be 2 people who will be sad. Yes sir. But ये तो नहीं हुआ. क्यों? 15,000 से कम था. ओके, इक्वल है सर 18,000. नहीं 15,000 से कम था, 12 कर दिया मैंने. Yes. Have you understood if condition, everyone? I hope now it is understood by everyone. If condition. आर्यन, तुम्हें भी समझ में आ गया? Yes. If it is a yes from everyone, we can move to the next sheet. Okay, so let's move to the next sheet. Next sheet is interesting. Okay, so it is asking if the customer is male and the age is between 40 and 50 years and there is no children, then the meeting status should be invited, else not invited. तो आपको मीटिंग पे बुलाना है कस्टमर्स को, लेकिन उसके लिए आपने 3 कंडीशंस रखी हैं.
कि पहला तो कस्टमर मेल होना चाहिए. इफ देयर इज अ फीमेल कस्टमर, वी सॉरी, यू आर नॉट इनवाइटेड. If the age is between 40 and 50, then you are invited, and you should not have any children. मतलब मेल वो वाला जो बिल्कुल 40 to 50 वाला एज का हो और कोई बच्चे ना हो उनके, उन्हीं को हम मीटिंग में बुला रहे हैं. अदरवाइज वी आर नॉट कॉलिंग एनीवन. दोज हु आर हैविंग चिल्ड्रंस एंड हु आर not in the age group of 40 or 50, and those who are not male, we are not calling them. Now how we will do this? Using if function only. If ही काम में लेना, if से कैसे करेंगे बताओ? Is it possible to use if and get the answer? Possible or not possible? Tell me. Narinder sir is there in today's meeting. Yes, yes, Alok, I am there. मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज नहीं आई, इसलिए मैंने चेक किया. नहीं, अभी आ रही है. अभी आ रही है सर. हाँ. अच्छा. See, I could see your name, but since मतलब आप अभी तक कुछ ना कुछ इनपुट्स आपके होते हैं, अभी नहीं है, इसलिए I just confirmed. नहीं नहीं नहीं, मैं बीच में I was मेरा ये ऑन था and I was somewhere else, but Okay. now I'm fully here. I'm fully here. Okay, sir. Great. So Thank you, everyone thank is you. right. You have to use ifs or nested if. Using if we cannot get the answer. The only reason is if can be used only when there are one condition. How many conditions are there? If you can see my camera, I'm pointing fingers. How many conditions are there? Three. How many if we need to write? How many if we need to write? मतलब you have to Sir, answer only again. one. How many if? Three. If. 3 or 2 or 1. So people are saying 3. हिरेन सर कह रहे हैं 3, कशिश कह रहा है 1, राहुल कह रहा है 2, और अक्षय कुमार ने भी 2 कहा है, कृतार्थ ने भी 2 कहा है, गुरजोत is saying 3. Oh my God. Gurjot. When you say that, I can guess that it is not 3. So people have learned to नहीं, read me you know, also. आपकी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टीचर की बॉडी लैंग्वेज समझने लगते हैं. हाँ बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन रख रखा कि आप समझ जाए मैं मेरे फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, मेरी आवाज कैसी है. सी दैट इज हाउ आई टीच बेसिकली. इसलिए मेरी क्लास इंटरेस्टिंग लगती है लोगों को, एंड दैट इज व्हाई आई एम लाइक लकी इनफ टू गेदर पीपल. अदरवाइज रात को 10 साढ़े 10 बजे कौन एक्सेल पढ़ता है? मतलब देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू डू, बट स्टिल यू आर हियर. आई एम ब्लेस्ड. ठीक है, तो नाइस. सो 4 कंडीशंस विल बी देयर. नो हर्षल, 4 तो बिल्कुल नहीं होगी, 4 ही तो है कंडीशन. चौथी कौन सी है? 3 ही तो कंडीशन है. वी हैव टू टेस्ट कस्टमर मेल है या नहीं है. एज 40 और 50. अच्छा, 40 को अलग काउंट करें, 50 को अलग काउंट करें, ठीक है. तो ये 1 2 3 4. सो इफ देयर आर 4 कंडीशंस, हाउ मेनी इफ वी नीड टू राइट? 3. सो द रूल इज कि हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर, उसमें से एक कम कर दो, उतना इफ लिखना होता है. I will tell you the reason. You will come to the reason now. ठीक है, तो जितना भी एक चीज याद कर लीजिए कि whenever you have to use nested if, we are using nested if, then I will show you ifs also. Nested if बता रहा हूं पहले. उसका रूल है कि number of conditions -1 is equal to number of ifs you have to write. This is the condition for nested if. तो जितनी कंडीशंस है उससे एक कम आपको इफ लिखना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट वाले के लिए यू डोंट हैव टू राइट इफ, वी विल डायरेक्टली गिव द आंसर. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. इज इक्वल टू इफ. लॉजिकल टेस्ट. व्हाट इज द फर्स्ट टेस्ट वी नीड टू डू? यस, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? जेंडर. सो इन जेंडर इट शुड बी व्हाट? Gender should be what? Male. Male. So I will write M, okay, in capital, because in gender M is written, okay, comma. What is the next condition I need to test? Age. So again I will have to write if, open the bracket, select the age, and age should be between 40 and 50. Now is there any way in Excel where I can write greater than also and less than also together? So we can write comma is greater than, and with the
Like, can I write like this? If age greater than 40, Alok, I remember there is a function as between. between. I think so. No, sir, no, sir, no, sir. वो rand between है. It will generate random numbers in between, but there is no function called as between. Okay. Okay. So there is no way actually to write two conditions together. There is no way. There is one way where you can put and. Okay. So I will teach you and separately. Let us do without and first. So I will write down if age is more than 40. This is one condition. Okay. So what I have done, पहले मैंने चेक करा मेल है क्या. मेल चेक करने के बाद मैंने करा क्या 40 से ऊपर का मेल है. और अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाती है, then I want to test the third condition. So I am putting one more if. What will be the third condition? Again, age and less than 50. Okay. So if these more than and equal to कर दो ना. हाँ ठीक है, more than and equal to कर देते हैं. तो equal to, more than and less than equal to. Correct. तो 40 वाले भी आ जाएंगे और 50 वाले भी आ जाएंगे. करेक्ट. तो और उसके बाद क्या है? चिल्ड्रन नो होना चाहिए. तो वी विल राइट डाउन इफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू व्हाट? नो. So we can directly select the Yeah, we can select the cells also. Instead of typing, we can select the cell also. That is also one way. But मैंने टाइप कर दिया अभी. ठीक है. We can do it that way also. So I put 4 conditions. ठीक है. I'm just zooming so that everyone can see properly. और अभी फॉर्मूला बार में देखना. पहला कंडीशन में रखा है कि कस्टमर शुड बी मेल. दूसरा है कि इस एज शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगा दिया गलती से. तो इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40. देन इफ age should be less than is equal to 50, and then if that E5, that children is equals to what? No. E5 should be no. E5 should be no. Now if all these conditions are matched, what answer I should get? What result should I get? If all the conditions are true, invited. Yeah, so we will say, we'll just write down invited. And if it is not matching, then not invited. invited. Okay. So now I have closed the bracket. Which if ka bracket I have closed? The last if ka bracket I have closed. How many remaining ifs are there? Brackets are there. 1, 2, 3. So I need to close 3 more brackets. 1, 2, 3. Now you will notice one more thing, that I have not given the false condition for other if because it is non-mandatory. ठीक है, मैंने ट्रू वाली कंडीशन तो लिख दी है और एक जगह लिख दी कि अगर ये ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, बट मैंने नहीं किया. नाउ लेट अस सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट. देयर इज सम टाइपो एरर. ओके, सो पहला वाला नॉट इनवाइटेड है. लेट अस सी फॉर अदर्स एंड वी आर गेटिंग false. There are 2 people who are invited. Customer number 4. See, customer number 4 is a male. He is not having any children and age is 40. And the last customer is male, not children, and age is 46. 2 are invited. Rest are not invited. Okay. और यहाँ पे false आ रहा है. Now, why we are getting false in this particular case? Tell me. Why we are getting a false in this particular case? सर वहां पे वो फीमेल है, मेल नहीं है. हाँ, वहां पे वो फीमेल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंडीशन, ये मेल वाली कंडीशन मैच नहीं हुई तो फॉल्स देगा. लेकिन आई डोंट वांट फॉल्स, आई वांट नॉट इनवाइटेड. देन व्हाट शुड आई डू? देन आई हैव टू राइट नॉट इनवाइटेड एवरीवेयर आल्सो. ठीक है, फिर हमको यहाँ पे भी नॉट इनवाइटेड लिखना पड़ेगा, इधर भी लिखना पड़ेगा. एंड इधर भी लिखना पड़ेगा. Have you understood what I have done? Yes. एक मिनट. Now I'm not getting false anywhere. I'm just getting invited, not invited. And have you noticed anything in my table? Apart from invited, not invited, have you noticed anything in my table? The conditional formatting applied. Very good.
गुरजोत। अदीशा, आज ही पढ़ा था हमने क्लास में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Yes, sir. Yes. Color. Yes. Repeat in a simple way. It's confusing. Okay. अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो एक कस्टमर नंबर 4 में क्यों ऐसे नॉट इनवाइटेड आ रहा है? कस्टमर नंबर 4 में क्यों नॉट इनवाइटेड आ रहा है? ओके, हाँ इनवाइटेड आना चाहिए था, मेल है और नो है और ये है। देयर इज सम मिस्टेक हियर। सेकंड में नॉट इनवाइटेड आना, उसमें इनवाइटेड आ रहा है। किसमें नॉट इनवाइटेड? अच्छा, इसमें ये चेंज हो गया मतलब सब कुछ, ये नॉट इनवाइटेड लिखने के बाद जो चिल्ड्रन वाली कंडीशन है वो रॉन्ग एक्चुअली। चिल्ड्रन वाली कंडीशन रॉन्ग है। हाँ, तो चिल्ड्रन वाली कंडीशन हमने कहा लिखी यहाँ पर। तो हमने कहा कि इफ दिस इज नो, ओके, तो हमें यहाँ पे यस लिखना चाहिए था एक्चुअली। नाउ इज इट फाइन? हाँ सर, कंडीशन तो नो के बेस पे ही है। हाँ, कंडीशन तो नो के बेसिस पे है ना, कि सॉरी चिल्ड्रन इज नो, वेट, if there is no children then invited, else not invited. Okay, so where are we getting wrong? Let me simplify it. एक बार फिर से करते हैं, let us write if, what is the first condition? Male. Okay, first condition is male, so I am selecting this only. ठीक है, if d5 is equal to d5, that is the first condition. Then check the next condition. Acha, can I write invited over here directly? Will it be okay to write invited? No, it will all invite all males. It will invite all the males. It No, will sir. invite. No, sir. Yes, so we will never write the true condition first. Let us test the next condition. So next condition is children. If children is what? No. Or if children is no, so I will select the column having no, comma, the row having no, comma. So this is the first condition, this is the second condition. Login Now should I'm coming to be age. done. Sir, Reference please login should be columns done. also. E8 should be logged. E8 को फ्रीज करना है। हाँ, Sir, E8 को similarly, freeze कर। D5 should also be logged. हाँ, right. I'm locking everything. So yes, so whenever you're using a reference, so it is better to lock. That is why I was not using a reference, I was typing it. So whatever ways you are using, you have to keep a track of this also. तो ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा हमने चेक कर लिया। तीसरा एज चेक करना है, तो दिस एज, ओके, इफ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 40, नाउ आई हैव टू टाइप 40, कॉमा, इफ अगेन, इफ एज क्या था हमारे पास, F5 लेस देन इज इक्वल टू 50। ठीक है, सो आई हैव पुट ऑल द कंडीशंस नाउ, 1 2 3 4। So if all the four conditions are true, then what should be the value? Invited. Comma, if all the four conditions are false, then what should be the value? Not invited. Okay, so this is the case. तो अगर मान लीजिए पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, वो सीधा फॉल्स पे चला जाएगा। ठीक है, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल नॉट गो टू द सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो इन दैट केस द आंसर शुड बी नॉट इनवाइटेड। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड द सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू बट द थर्ड कंडीशन इज फॉल्स, then also the answer should be not invited. So I will write down not invited again, comma, then if ब्रैकेट After second not invited, the bracket should be closed. correct, after second invited the bracket should be closed. So what we are doing is, now understand, जिनको complicated लग रहा था एक बार देख लो हमने क्या किया, इसको उल्टा चलते हैं अब। सो पहला लास्ट वाला जो इफ था उसका लॉजिकल टेस्ट रखा, लास्ट वाले इफ का, उसकी वैल्यू ऑफ ट्रू रखी और वैल्यू फॉल्स रखा। ठीक है, लेट मी क्लोज दिस। उसका लॉजिकल टेस्ट रखा, लास्ट कंडीशन रखी, वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू फॉल्स रखा। उसके पहले आए
तो पहले वाला था चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का हमने लॉजिकल टेस्ट रखा कि इफ इट इज नो, देन उसका वैल्यू ऑफ ट्रू विल बी टू चेक द लास्ट कंडीशन, ठीक है। बट वैल्यू ऑफ फॉल्स विल बी नॉट इनवाइटेड, तो ये मैंने नॉट इनवाइटेड करा, एंड देन आई हैव टू क्लोज द ब्रैकेट फॉर दिस आल्सो। देन थर्डली, द फर्स्ट कंडीशन जो पहली बार चेक हो रहा है उसका भी अगर नॉट है तो नॉट इनवाइटेड आना चाहिए। So I'll close this bracket also. Now, whatever brackets I have put, I have closed. So 1, 2, 3, 4, and here 1, 2, 3, 4. Now let us say enter. पहला वाला not invited है. Is it true? First वाला Yes. answer is not invited. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. What about second one? Yes. Not invited. What about third one? Not invited. What about fourth one? Invited. What about fifth one? Not invited. What about sixth one? Not invited. What about seventh one? Not invited. What about third one? Eighth one invited. Now is it fine? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes. And I'm copying this. No, I'm not copying this. You have to try on your own. ठीक है? मैं Zoom chat पे नहीं दे रहा हूँ. कोई और कॉपी करके मत देना. You will try it on your own. ठीक है? चलिए. Now see. It was a lengthy way of writing a formula, right? It was a lengthy way. Can we have a different way? I will teach conditional formatting also, but after this. So now this was using nested if. यहाँ पे मैं लिखता हूँ using nested if. Now we will use using ifs, IFS. So I will use IFS and let us see if it is easier than nested if. So let us write IFS. Sir, excuse me. Sir, I am getting false in customer 3 and 5. You are getting false in 3 and 5. Earlier I was not getting, but I was getting the same answer. Now, अच्छा, I have तो see the how same many answer. times you have written not invited. 1, 2, 3, 4. It should be 4 times. So just Check. a moment. I'll just count and just let you know. Yeah, I'm pasting it. You can check this. You can check this. Sir, I have written it 3 times. You have written how, so you have to write 4 times. 4 I times. I have shared the formula in the chat. You can check it out. Sir, I will be doing net with and also. It will be easier. Yes, I will show you and also. See, writing if is very complicated, so we should avoid it. But I'm using ifs now, so IFS. What is the first logical test? That the gender should be male. Correct? Sir, I copied your formula, but the answer I'm getting is customer 2 and 6 are invited, Okay. not 4 and 8. Okay, what we'll do is just share me the screenshot of the table and the formula also in the chat box. I will check it out. एक बार आप Sure, sir. screenshot लेके भेज दीजिए, मैं check कर लेता हूँ. I think Sure, this sir. will not work. Okay. Now logical test 1. So first test is that whether this is male or not, gender is male or not. So we will put this test, comma, we will freeze this. Now we don't have to give, we don't have to apply this thing. Again, nested if. So we can write the second test. What is the second test? Second test, children is no. Children should be no. So I'm selecting no and I'm freezing this. What is the third test? Third test is the age. So age I am selecting and I'm putting greater than is equal to 40. Hello, my voice is Again, I am selecting age less than is equal to 50. Hello. Hello? Sir, ifs will not work, I think here. Ifs will not work. Why? No, sir, because in ifs there is a one test value if true, second test value if true. So multiple test will not there in ifs. For multiple tests, you have to, I think, use if or if with and. Okay, let us see if we are getting the answer or not. Okay, so we are getting true, true here and false, true, false, true. This is a value error over here. Okay, so I'm not freezed, I guess. Some mistake I've done. Sir, Just there a is minute. not a condition, any condition in ifs that test multiple condition at once. Check ifs formula. There is a logical test value, logical test value.
Logical test value of true. Logical test value of true. Okay. So I have to. So if the first logical test is true, then I'm checking for the second test. Now it'll not work like this. Sir, this sheet is actually for if function and function, not for Correct. if हाँ भाई, nested if. Okay. हाँ Okay. जय श्री कृष्ण भाई, No, we can बोलो do ना भाई. this using ifs also. We can do is using if also, but it will be very complicated. I have done it before. That is why I'm saying. Okay, so we can apply logical test and value of true. सुनिए तो, We can do like this. What I'm doing US, now. Sir, We can but do- then it will invite all. S for sun, yeah? Invite all mail, it will Then invite it would all invite all, no, sir. person having no. UX, Invite all UX person graphic having design. age greater than 40. Okay. I for India. UI graphic design. અચ્છા, આમાં શું આપણે ઓલું જાણવું હતું? મને Okay, now see what we need to do now is we need to we will use and function, है ना? So that will be easier. Let us not complicate things. मैं and पे आता हूँ. So whenever you want to test multiple conditions, we can use and function. So in the if you will put and, okay, and then first you write the first logic, that is it should be male, comma, comma. The second test, children should be no. That is easier actually, comma. The third test, this should be greater than is equal to 40. And the fifth, this should be less than is equals to 50. Sir, instead of writing like this, we can write 50 less than or equal to the cell reference of age and greater than or equal to 40. That would work. How? Sir, 50 first less write than down or equal 40. to. No, Okay, I understood. first write Okay. 40. Keep So 40 50 as it is. less than equals 40. to Cell No, reference sir. 40 of less than F5. equal to. Okay, and then No, sir. So you greater have than or written equal 40 to less than 40. equal to. like this. Okay. Yes, sir. Okay, great. So we can do that. So this is AND function. So we are testing all the conditions at one go. If all the conditions are true, then we can say invited. If all the conditions are not true, we can say not invited. And we are getting the answer. Same answers we are getting. Okay. And it is highlighted in the second column also. Sir, So I'm putting customer this. 6 is separate. Huh? Customer Customer 6 is 6. wrong. Customer 6. Number 6. 6 is also getting invited. No, That is what you're saying. Six is also getting invited. D10 is equals to male, that is okay. E10 is equal to no, ये भी ठीक है. So this is not working, my friend. Less than or greater than वाला जो जिसने किसने दिया था logic? As I say, first write down 40. 40. First Instead 40. of 40, 40. Now write down now change the sign to greater than to less than. Not that one. Last one. It is less than. No. First one is less than. That greater than. There also less than. Greater than, not less than. That less than. There should And be less less than than. sign. So remove greater than sign. Now check. We are getting not invited now. Okay. Ek minute, let me just put everywhere. Now everyone is not invited. Less than 40 तो हमें चाहिए ना, यहाँ पे greater than 40 होना चाहिए ना. Greater than 40 means वो Age should be greater than F5 F5 should be greater than is equal to F5 है, 40, वो right? 40 से greater than होना चाहिए तो 40 वो F5 से less than होगा ना.
सर वो F5 से लेस देन ही दिखा रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट उल्टा दिख रहे हैं हम लोग। F5 से 40 लेस देन, F5 40 से ज्यादा होगा तभी कंडीशन ट्रू होगी, करेक्ट। हाँ, और यहाँ पे 50 से भी 50 शुड बी ग्रेटर देन F5। No, sir, it was wrong. no, F5 should be less than 50 because we want 40 and 50, between 40 and 50. Then everyone is getting not invited. If we are putting less than sign at what the place? F5 is greater than or equal to 50. We cannot do both together actually, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला, ये दोनों एक साथ चेक कर रहा है। अभी एक ही नंबर 40 से बड़ा और 50 से छोटा। हाँ सर, वही आएगा ना, 40 से बड़ा और 50 एक से एक छोटा। सेकेंड एक सेकेंड, आई थिंक इट शुड वर्क। वेट आई एम जस्ट ट्राइंग वन थिंग। नहीं, there is some trick actually, you have to use inverted commas when you are putting two symbols, तब हो जाके आता है ये। हाँ सर, आपका आ रहा है क्या सर उससे सही? नहीं सर, मैंने कि सर एक काम कीजिए ना, सिर्फ एक किसी जगह पे 45 लिख के सिर्फ यही कंडीशन को ट्रू या फॉल्स चेक कीजिए। आलोक, F5 को फ्रीज तो नहीं करना पड़ेगा? Try it, get yourself confirm and then suggest. Now we are getting the right answer. We have to write it separately. ठीक है, मैंने अलग अलग लिखा है अभी। That is the right way actually. But if you want to use together, then there is some combination we need to do that I will try some other time and I will tell you. If you are getting that answer using together, yes, that is the right way actually. And I'm putting this formula for everyone reference in the chat box. Okay, now coming to the next. Shall we move to the next? Sir, Yes. just a moment. Sir, kindly also paste the formulas for ifs, na? The earlier one. Okay, the ifs. Formula in the chat box, sir, please. Okay, fine. But I have not Thank you. used if ये वाला use किया मैंने। हाँ, इसको रख देता हूँ मैं। Sir, ifs wala. हाँ, yes. This only. Earlier one, हाँ, yeah. I Thank you. put. Thank you. ये कौन है, मयूर है क्या? Who was asking for this formula? Sir, Hiren. अच्छा, हिरेन जी। Okay. There is one more student who sounds like you. तो I was Okay. just wondering कि वो आया क्या actually. Okay, not a problem. चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट में। एंड नाउ वी हैव टू यूज और, इंस्टेड ऑफ एंड वी विल यूज और। बोथ आंसर आर डिफरेंट। नाउ आई विल टेक अप क्वेरीज आफ्टरवर्ड्स बिकॉज इट इज रीचिंग 11 बज रहे हैं। 11 बजे का आई हैव पुट अ टाइम लाइन टू स्लीप। मतलब आई डोंट वर्क विद गैजेट्स एंड ऑल। दिस इज अ प्रिंसिपल दैट आई फॉलो, ट्राइंग टू फॉलो एक्चुअली, कि 11 बजे बाद सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक आइटम दूर करके I try to take some rest and everyone should follow. कि आप there is a rule which I have learned, इससे पहले मैं वो बता देता हूँ कि there is a principle to live a good life, 3-2-1. 3-2-1. Now what is this 3-2-1? 3 means that 3 hours before sleep you should have your food. 3 hours before sleep you should have your food. So if you are sleeping by 11 o'clock, then have your food by 8 o'clock. So 3 घंटे पहले खा लो जो भी खाना है। 2 hours before sleep, you should stop stop watching anything which will have a negative impact on your brain. Okay, 2 hours before sleep you should not watch anything which is like which will have a negative impact on your brain. ठीक है, 2 घंटे पहले कोई भी नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीज कुछ भी नहीं सुनना है, देखना है। ठीक है, एंड 1 hour before sleep you should avoid watching any electronic device. ठीक है, because electronic devices throw a radiation which is very harmful. तो आपको 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले
सारे उपकरण जो है ये सब बंद कर देने हैं, ठीक है। Remove all your phones, your tablet, your laptops, everything away. Keep it away from you, and then only you sleep. Okay, and try follow it, and you will see the change in yourself. Okay, in your sleeping pattern, in your routine life. I have been doing it. पहले मैं भी बहुत एडिक्टेड था फोन से, और रात को नींद नहीं आती थी तो आई यूज टू वॉच रीड समथिंग ऑन द फोन और वॉच रील्स और व्हाटएवर, टाइम पास करते रहते थे, 12-1 बज जाती थी और सुबह की ऐसी तैसी होती थी, ठीक है। तो डोंट डू दैट, है ना। डिसिप्लिन, यस, यू हैव टू यूज दैट स्ट्रेटजी 3-2-1, इट विल वर्क। चलिए, now let's come back to Excel and complete this. So if the customer is either from west or south, then meeting status should be invited, else not invited. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कस्टमर साउथ या वेस्ट में से कहीं से भी आ रहा है तो उसको बुला लो, अदरवाइज नहीं। देन व्हाट यू शुड डू, वी विल पुट इफ or then zone, it should be either what, west, or it should be what, south, ठीक है। क्लोज द ब्रैकेट फॉर और, ठीक है। सो इफ is it either west or south, close the bracket, then we should invite him, invited, comma, not invited. That's it. Check if we are getting the right answers. The zone should be west or south. So I'm just typing W/S for understanding. Are we getting the right answers, everyone? Yes, sir. Okay, now how to apply conditional formatting, ये मैंने बोला था मैं बताऊंगा, लेकिन बताया नहीं था, यहाँ बता देता हूँ। Now, Adisha, you tell me कि जहाँ पे invited आ रहा है that should appear in green, और जहाँ not invited आ रहा है it should appear in red. What should I do? Sir, we should select the entire meeting status column Yes, then and we'll go to conditional formatting. then Sir, highlight cells rule, then text that contains. then Here we'll write not invited to appear okay, in red and invited to appear in green. correct. Invited to appear in green. Again, we will repeat the same process. Text that contain invited, and it should appear in green. So it's a very like okay, हाँ, Adisha, now I caught you here. ठीक है, अभी देखिए invited word is common between both invited and not invited. Now how to apply now? Invited word. Sir, you put not only. You did not select put not invited for red. Okay, not only. Okay, great. Who was that? Who was Actually, that? Huh? not invited. You have to write fully. Else it will show green for all the things. No. If I write, see, if I write not invited, okay, it will show me all red. That is fine. But when I want to find out invited, okay, then it is showing me green in not invited also. See what is happening. Because it is text that contains having invited word. So when I select invited and green, everyone will turn green. How to have green and red both colors? So when we are applying for the non-invited condition, instead of non-invited, we can just write not. No, that is what I don't want. तुम लोग जुगाड़ मत बताओ मुझे कानपुर वाले, जुगाड़ नहीं चाहिए कि नॉट ही लिख दो। नॉट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट? आई वांट नॉट इनवाइटेड, उसके सिर्फ बाद नॉट आना लिखने चाहिए से भी आंसर। नहीं दैट होगा इज व्हाट यू क्योंकि वो शुड ट्राई इनवाइटेड तो इट। हो ही जाएगा कलर। हाँ, Write the नॉट करेंगे तो cell. हो ही जाएगा ना। व्हाट इज द चैलेंज, व्हाट इज द बिग थिंग इन दैट? ना सर, सिर्फ नॉट लिखेंगे फिर भी नहीं होगा क्योंकि वो इनवाइटेड लिखेंगे तो ग्रीन ही हो जाएगा फिर से। नहीं, नॉट लिखे तो हो जाएगा ना। देखो नॉट लिखा मैंने यहाँ पर, अभी करते हैं। हाँ, अभी वो सर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बोल रहा हूँ, उसमें नहीं बोल रहा हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बोल रहा हूँ
कि अगर मान लो वहां पे नॉट इनवाइटेड लिखा हो और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सिर्फ नॉट लिखेंगे, फिर भी वो इनवाइटेड की वजह से वो कलर कर ही देंगे। करेक्ट, कर ही देगा। तो वही तो, कैसे होगा ये? अच्छा, इट्स अ होमवर्क, ट्राई इट, कल बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी जो इसने बोला था गुरजोत ने, आई डन दैट। तो अभी इनवाइटेड इज कमिंग एज ग्रीन एंड नॉट इज कमिंग एज रेड, बट दिस इज द जुगाड़ विच आई डोंट लाइक। मैनेज रूल सर से कंडीशनल जाके Sir, we can use equal to. हाँ, Equal to we can use. कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके फिर न्यू रूल। क्या क्या? न्यू रूल, यस, यू हैव टू क्रिएट न्यू रूल, करेक्ट। We can चलिए, also use equal to, sir. okay, okay, एक मिनट, let us just complete this one. Now what you are saying, what we can do, we can go to new rule, सर कंडीशनल, यस सर, न्यू रूल। and then what should I write in the rule? If this range is having is equals to not invited, complete word into inverted commas, then give me a red color. गुरजोत, यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगा लेती। ठीक है, not invited, and whenever you are putting any new rule, you have to remember one thing, that you have to remove the dollar before the series, because it will not test all the conditions otherwise. ठीक है, now we will do the same thing for invited. See, Excel is something which you have to practice a lot to get this kind of mastery, else you will never get. ऐसा नहीं है कि मेरे 21 दिन का चैलेंज किया और 21 दिन में सब सीख लिया, फिर 21 दिन तक एक्सेल देखा ही नहीं, और उसके बाद जब देखोगे तो फिर आई विल आस्क यू, क्या तुम्हें याद है? फिर तुम लोग, हाँ मुझे याद है, बट कुछ याद नहीं होगा तुम्हारा, कुछ याद नहीं आएगा। ठीक है, नाउ दिस आई हैव डन। गुरजोत, Sir, we can do it by equal to also, no, sir. व्हाट इक्वल्स टू? Conditional formatting. हाँ 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 हाँ, करेक्ट, इक्वल्स टू, वो लिखने की जगह आप इक्वल्स टू भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग इन एक्सेल, तो whatever way you like you can do it. Now we will, Sir, you are on mute. Sir, you are on mute, not audible. Sirji, you are on mute. Sir, your voice is not coming. right now we will have at 9. First we will complete this if function, then I will take your doubts for this thing. I am on mute. No, I am not on mute. I hope I am. Sir, please repeat again. Okay, so I was saying कि tomorrow we will have the session at 9 o'clock. 9 o'clock I will start. First 20 minutes I will finish this sheet, so don't miss 9 o'clock wala. 9:30 I will start. 9:30 to 10 I will discuss your problems related to D, मतलब जो previous day जो मैंने भेजा है, जिसमें sum निकालना है आपको. I will show that sheet basically which I had asked you for day 5. And then tomorrow are what topics? Aryan, can you tell me what are the topics for tomorrow? Day 7, what we have decided for day 7? So make sure that you complete this tomorrow. Okay, कल की क्लास में आने से पहले ये पढ़ के आना, ये कंप्लीट करके आना जितना से हो सके। डे 7 के लिए एडवांस लॉजिकल फंक्शन। हाँ, तो एडवांस लॉजिकल फंक्शन में देयर आर सम एडिशनल फंक्शंस विद सम एडिशनल केस स्टडीज दैट वी विल डू टुमारो। ठीक है, उसके नाम बताओगे पढ़ के एक बार? एडवांस लॉजिकल फंक्शन में क्या क्या है, और लेट मी ओपन दैट। सर जो आज है डे 6 आई गेस। हाँ हाँ, सर उसका कोई टास्क नहीं है? उसका टास्क है ना ये लास्ट वाला, एक्सरसाइज 04। सर ये वाला एक्सरसाइज 4। बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। क्या क्लियर नहीं हो रहा है? सर सब नया नया लग रहा है देख के, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये कौन बोल रहा है नया नया लग रहा है? सर वेदिका। वेदिका तुम बोल रही हो ये? सर तुम, मंथ फंक्शन से सर डेट को ट्राई किया बहुत टाइम्स बट आ नहीं रहा था। चलो ठीक है, वी विल डू, ये वाला कह रहे हो ना नया नया लग रहा है, डे 5 टास्क। यस सर।
हाँ, this I will cover because I did not multiple cover the date functions ना, वो उस दिन date function पूरे हुए नहीं थे, तो don't spend time on this. Tomorrow we will take up this. ठीक है, वो if वाला खत्म करके, और task for today is to try and get the answer for this. Wait, आज का टास्क ये है, कल आपको ये करना है कि इसमें this can be solved using if function, nested if. So you have to try applying nested if in this particular sheet. ठीक है, और Okay, जितने sir. चार्टेड Please send the अकाउंटेंट्स हैं Sir, they day would be, 7 हाँ बोलिए। sir, day 7 में है and or not if error if that switch. हाँ, तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड और, तो Sir, हम actually, day 6 was is blank, is text, that functions were there. But instead of day 6, we have completed day 7 task. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो टुमारो वी विल कवर द बेसिक, इज ब्लैंक, इज इफ एरर वी विल टीच टुमारो, ठीक है, आई विल कवर Sir, ऑल we दोस have थिंग्स not टुमारो। covered not today. हाँ, तो टुमारो आई विल कवर नॉट, ओके, वॉट एवर वी हैव नॉट कवर टुडे वी विल Okay, कवर sir. टुमारो। चलिए, विद दिस गुड नाइट टू एवरीवन एंड होप यू लाइक Sir, one song. वन सॉन्ग। अभी तक तो मेरा गला खराब था, मेरा गला खुल गया एक्चुअली ये क्लास लेने के बाद। बट आई डोंट नो विच सॉन्ग टू सिंग। एक सेकंड, पहले मैं ये बंद कर दूं शेयरिंग वाला। एनी सजेशंस एनीवन बिफोर वी एंड अप फॉर द सॉन्ग्स? एक्चुअली इट इज रिलैक्स। KK song, sir. हाँ, KK song. के तेरे हवाले। ओके, राहुल का तो तेरे हवाले ही फेमस है। चलिए, तो आई विल सिंग वन Yes, sir. अरिजीत का फॉर 2 लाइन्स फॉर अरिजीत, एंड के का भी एक ले लेते हैं। के का पहले सुना देता हूँ। के का आई लव वन। इबादत, sir. के हाँ, कुछ दिल हो, इबादत. दिल इबादत। ओके, देयर आर सो मेनी रिक्वेस्ट। ओके, लेट मी ट्राई। ठीक है, इफ दोज हु वांट टू लीव दे कैन लीव बिकॉज नाउ वी विल हैव अ म्यूजिकल सेशन। अब लोग रुक जाएंगे बिकॉज आई नो इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सिंग होना चाहिए, तो अब लेट इंटरेस्टिंग मी। होगा सर क्लासेस और। हाँ, अब इंटरेस्टिंग होगी, हाँ। तो कल सब बीच बीच में एक आध गाने ले लिया करेंगे कल से। सो आई एम टेकिंग वन दिल इबादत फ्रॉम के। Actually, I don't remember the lyrics of all the songs, but I will try. I'm just opening the lyrics. दो ही लाइन सुनाऊंगा इसकी और फिर हम दूसरे गाने पे चले जाएंगे। Okay, sir. ओके, तो हियर इट इज। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको कर लूं मैं हासिल, लगी है यही धुन, जिंदगी के शाख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको कर लूं हासिल, लगी है यही धुन, तुझे जो भी जितने पल जियूं उन्हें तेरे संग जियूं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। सो दैट वाज दिल इबादत। और उसके बाद एक आया था सॉन्ग कुछ ना कहो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय सॉन्ग, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी 1942 अ लव स्टोरी। और उसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। व्हेन आई वाज किड, मतलब मैं शायद 5th या 6th क्लास में था, व्हेन दिस मूवी हैड कम, कुछ ना कहो, दिस 1942 अ लव स्टोरी, एंड उसके अंदर एक गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो माय फादर इज ऑल्सो फाउंड ऑफ म्यूजिक, एंड वो उस समय ऑडियो कैसेट चलती थी, सो वो ऑडियो कैसेट लेके आए थे, और मेरा एग्जाम था अगले दिन, है ना, एंड आई वाज लिसनिंग टू, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, रिपीट मोड पे।
तो उस समय तो कुछ ऐसा था भी नहीं, कोई लड़की भी नहीं थी, बट स्टिल दैट लव वाज देयर फॉर द सॉन्ग्स। तो उसी मूवी का गाना है ये कुछ ना कहो, विच आई ऑल्सो लाइक अ लॉट। ठीक है, और वही सुन लेते हैं। सो इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, दिस सॉन्ग इज लाइक वाओ। ठीक है, और इस पे बहुत सारे अभी वो बन रहे हैं, मीमेज बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं। ठीक है, जिसमें वो लड़की बोलती है कि मेरे को पैसे चाहिए। वन डिवोशनल सॉन्ग, यस डेफिनेटली आई विल टेक वन डिवोशनल सॉन्ग ऑल्सो। चलिए अभी पहले कुछ ना सुन लेते हैं, कुछ ना कहो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है। आवाज कटी भी आई यार। और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। ठीक है, सो दिस वाज कुछ ना कहो, एंड थैंक यू हिरेन जी। उसके बाद तू है आसमां पे। अच्छा ये तो केके का ही गाना ना। तू है आसमां में, तेरी ये जमी है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है, तू ही दिल है, तू ही जां भी है, तू जमी है, आसमां भी है, तेरी चाहत जिंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है, तू आशिकी है। चलिए वन लास्ट सॉन्ग फॉर वन डिवोशनल सॉन्ग, एंड दिस इज अ सॉन्ग विच आई रियली लव। मतलब कल जो मैंने गाना गाया था डिवोशनल, वो मैंने रिसेंटली सुना था कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ठीक है, और एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत टाइम से पसंद है, डिवोशनल सॉन्ग, एंड इट्स वेरी टचिंग, और ये इट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। आप लोगों ने सुना होगा शायद ये वाला गाना। ठीक है, और आप किसी भी धर्म से हो, बट दिस इज द सॉन्ग विच अप्लाइज टू एवरी रिलीजन। ठीक है, व्हाट्स एवर इट इज, बिकॉज देर इज वन थिंग विच इज कॉमन, दैट वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट इज बिकॉज ऑफ हिम। वो ही करता है जो भी कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक गाना है। ठीक है, एंड आई शेयर माई स्क्रीन टू शो यू द लिरिक्स फॉर दिस, एंड देन आई विल सिंग दिस सॉन्ग। सो दिस इज द सॉन्ग विच आई लाइक द मोस्ट, और इसको बहुत सारे लोगों ने गाया है, एक बट जया किशोरी की आवाज में बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, और नाउ आई एम गोइंग टू सिंग इट, आई होप यू कैन सी द लिरिक्स। और गाना कुछ इस तरीके से है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
और कहते हैं कि अगर वो आपके साथ है तो फिर आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। और उसी पे ये लाइन लिखी है कि तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से ये, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। थैंक यू एवरीवन एंड रियली आई एम फीलिंग वेरी गुड। मेरा गला इतना चोक हो रखा था, लेकिन मेरा गला खुल गया। और दिस इज द पावर ऑफ, दिस द मैजिक एक्चुअली, कि जो चीज आपको पसंद है अगर आप वो करते हैं ना तो आपकी बॉडी भी आपके साथ देती है। तो एंड डेफिनेटली व्हेन यू हैव लवली ऑडियंस तो फिर मजा आता है। आपकी कृपा से एक्सेल का साथ हो रहा है। मेरी कृपा से नहीं, आप लोग सबकी कृपा से। कि अगर आप लोग नहीं आते तो ये चैलेंज सक्सेसफुल थोड़ा ना होता। अगर 15-20 लोग रोज ना जुड़े फिर मजा नहीं आएगा, फिर इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड कंटिन्यूइंग विद दिस चैलेंज। और रात को 11-11 बजे तक आप लोग साथ में रुके हुए हैं। एवरीवन वुड बी हैविंग अ शेड्यूल टुमारो, बट स्टिल I also have a busy schedule, but yes, thank you. So someone has written a message, I'm just reading. लिरिक्स कैसे याद रहते हैं? हाँ जैसे एग्जाम में पेपर लिरिक्स कैसे याद रहते हैं, वो ऐसे याद रहते हैं कि व्हेन यू रिसाइट इट अगेन एंड अगेन, और मैं इतनी बार गा चुका हूँ गाने कि मुझे याद रहता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आपको वो चीज याद रहती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो अगर लड़की में इंटरेस्ट है तो लड़की की याद बहुत आएगी। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई याद आएगी। अगर एक्सेल में इंटरेस्ट है तो एक्सेल के फॉर्मूले याद आएंगे। गाने में इंटरेस्ट है तो गाने याद आएंगे। और गालियों में किसी को इंटरेस्ट है उसको गालियां गालियां याद आती है। तो जिसमें आप इंटरेस्ट लोगे उसको वही याद आएगा, वही वो चीज बार बार बोलेगा। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट जो है वो दो चीजों में है अभी फिलहाल। एक तो एक्सेल में और दूसरा गाने में। तो दोनों चीजें मुझे याद रहती है। और तीसरा मेरे घर वाले, मेरी फैमिली मुझे बहुत याद आती है। तो बस ये तीन चीजें मैं याद रखता हूँ, बाकी सब चीजें भूल जाता हूँ। बाकी अपने काम में वो रहना चाहिए, ठीक है। यस, तो मुझे एक्सेल बहुत पसंद है। आई लव एक्सेल, तो दैट इज वाई। यस सागर। So if for DT function today function we break for new function in one day, as already tomorrow is 7 days, so we can complete all the days. We can break it into also. I will take a break. See, we will give you a break. मैं आपको बताता हूँ कि break कब होगा, because I will be journeying. I will be moving from Kanpur to Ajmer, my place. So that will be 9th. So on 9th we will not have any session. तो 9 तारीख, दिवाली को ब्रेक लेंगे ना, दिवाली हाँ वाले दिन, हाँ, दिवाली दिवाली वाले वाले दिन दिन तो break। ब्रेक हो गई। 12 तारीख संडे है, जिस दिन दिवाली है उस दिन ब्रेक हो गई। और उससे पहले वाले दिन जो धनतेरस या छोटी दिवाली होती है, उस दिन वी विल मैनेज द टाइम। वी विल सी इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल। वी विल हैव इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून और वट एवर, और अर्ली इवनिंग, बिकॉज शाम के दिन सर 14 को भी छोड़ दीजिएगा। किस दिन? 14 14 को? हाँ 14 को क्या है? सर 14 हम सब ट्रेवल करेंगे